Hello learner, in this video we are going to see how to give the accounting treatment at the time of dissolution of partnership firm. Accounting treatment on dissolution of partnership firm. The following necessary accounts are to be prepared to close the books of the firm. First of all, the first account we are supposed to prepare is realization account. In admission, at the time of admission and retirement, we are supposed to prepare revaluation account, and at the time of dissolution we are supposed to prepare realization account because the firm's assets are sold out and liabilities are paid off. तो उसके लिए जितना भी फर्म का वैल्यू रियलाइज होगा इसके लिए हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स का अगर लोन अकाउंट है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में बनाना है कैश एंड बैंक अकाउंट. एट द एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म विल गेट जीरो, उसमें बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचेगा, एंड कैश अकाउंट विल गेट टेली बिकॉज कैश भी नहीं बचेगा बिकॉज वॉट एवर कैश वी हैव रिसीव्ड वो सारी की सारी अमाउंट हमें क्या कर देनी है, पे कर देनी है. तो एट द एंड कैश अकाउंट विल गेट टेली. नाउ देर आर सम few steps to solve the sums, to solve the numeric sum of the dissolution of partnership firm. The first step, transfer all the assets of the balance sheet to the debit side of the realization account at their book value. book value पे सारी की सारी वैल्यू हमें जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है एसेट साइड वो सारी की सारी वैल्यू हमें बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. Distribute reserve accumulated profit to the partners and transfer the opening balance to the capital account. यानी कि जितने भी रिजर्व्स है, जितना भी accumulated प्रॉफिट और लॉस है, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल है, तो सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो भी है वो हमें ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करना है कैपिटल में. आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द बैलेंस, स्टेप नंबर 2 इज ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू. जो भी लायबिलिटी है, मान लो क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जितने भी लोन है, कोई भी आउटसाइडर लोन है थर्ड पार्टी की, तो सारी की सारी हमें क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करना है एट द बुक वैल्यू. Step number 3, give the two effects of adjustments. One is in the realization account and one is either in the partners capital or in the cash and bank account. Partners capital में क्यों आएगी? मान लो आप कोई भी एसेट सेल कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम एंट्री करेंगे. एंड एट द टाइम ऑफ whenever the partner is taking over the assets, at that time we are supposed to get the money from the partner, right? तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई आइदर वन इफेक्ट विल बी कन्फर्म इन द रियलाइजेशन अकाउंट एंड अनदर इफेक्ट विल कम आइदर इन पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनर लेके जा रहा है या तो फिर लायबिलिटी पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड द सेकेंड इफेक्ट विल कम इन द कैश एंड बैंक अकाउंट. स्टेप नंबर 4 आएगा, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा दैट वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू द कैश एंड बैंक अकाउंट. यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस आती है दैट वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड एट द एंड cash and bank account will get tally. So this is the way how to calculate the sum, numeric sum of dissolution of partnership firm. Thank you.